Okay, so let us start with the group task now, and let me give you one task. When you go there, sometime what they will do, they will give you 2 pages, 3 pages of task, and each one of you is to read the task and provide the solution which is asked through that particular task. Now I am giving the task to you today in the form of PDF. The PDF has already come now on your WhatsApp group. Also check your WhatsApp groups. I'll give you 5 minutes to read this particular PDF, and then at the end there is a question which is asked. You must be getting this PDF on your WhatsApp. There is a group Yes, sir. 5. Yes, sir. So this is the growth of evolution of Indian automobile sector, and also he's telling you about how the Indian automobiles industry evolved, and then later on how the changes came. But with the growth, there was physical and environmental constraints to the growth. That also is provided. And then at the end, there is a task given. So give yourself 5 minutes. Go through this document in detail. And then we discuss further the task which you have to solve. Available on your WhatsApp group. Please go through this. Please keep yourself mute, each one of you. Indeed, perhaps nothing else symbolizes the meaning of the Indian consumer landscape within teaching consumption of research. Data for the judges of pursuing time hardening mobility and convenience. What really accelerates the development of Indian auto was the liberalization of the pursuing the political and mobilize explosive. Yes, nowadays any Indian steps out of this fields such work towards reducing and so on. The question were provided with the test in the automobile sector with figures of benefits of investment. Quality of life of people
So how can we read this full PDF? It is already provided in the WhatsApp group. Please check it out, PDF. So you have to read it in your mobile or something. Though I provide you next page here, but I have sent you the PDF. Maybe now you can read 2 pages also. But then there are 3 pages to this. Task is on the 3rd page. So go through the PDF which is provided to you. Okay, so I think this was pretty simple task. It was, you must have gone through this, and now I think we should proceed forward. So, this evolution of Indian automobile sector is given to you, and it is shown that how India may automobile sector is growing, how we started with Maruti, with the collaboration with Japan, and now we are even producing a Mercedes, the era of Fiat and Ambassador, and now so many fancy cars and brands. So at the end the task is given. The problem now we have reached is like infrastructure, road infrastructure, pollution, carbon emission, global warming, and huge population base of India, traffic congestion. So that is the problem which we have now attained. Now you are professional who are to provide the solution, that what can be the probable solution to these issues, because population cannot be controlled overnight, and automobile sector cannot stop growing, and companies they look for the growth, and in any economy growth is important. And now automobile has become a part of, very integral part of quality of life when we want to go for job or work, for when we are to go for on work and everything. So we cannot imagine the life without automobile now. At the same time things are not becoming sustainable, so you guys are to give me the solution, very pertinent solution and innovative solution at the end of the discussion. And I want you to remember that is a group task. That means you are not fighting with one another, you are fighting together. So you have to give the solution, you have to discuss, you get sufficient time to talk, and keep jotting down the relevant points so that at the end you summarize everything very meticulously. So you can start your discussion and give your points, listen to the points of others,
and take the discussion forward, and you need to hit the consensus at the end. So that is what I want. So please go ahead now and start your discussion. Good morning, friend. Good morning, friend. Are you able to hear me? Yes, you are. Yes, we are. Good morning, friend. My name is Manish Misra. In my opinion, it is a very interesting topic. As a professional, we always want a growth of IOCL. Oh, sorry, we always want to growth of Indian mobile sector. But for growth as well as we want the sustainable and sustainable development of the India. So as we want to growth, we first of all we will reduce the cost of car, like it is we are seeing in the market. SUV car, but is not reachable to every Indian person. Second thing, like as in the present time, every car is running like as a speed on normal road, so we can decrease the speed of car. For pollution control, now we're seeing sulfur, nitrogen in the air. So that combined with our body's hemoglobin, that reduce transportation of oxygen, that affect our health. So we can use alternative energy source like biofuel, biodiesel, etc. Can increase our engine's efficiency using catalytic converter that reduce emission. For traffic control nowadays, seeing that Yes, people are And using cars without any I agree with you. important. I agree with you, my I friend. I agree with you, my friend. As the topic was like the automobile sector is growing, and it is because I think why in India, and the per capita all income is also increasing. So people are going toward the modernized lifestyle that they want, and the fancy lifestyle that they want. So that's why there is people are buying more and more cars. So we should also increase at that pace. Like the cars should also increase, and the production of cars should also increase. The quality of cars should be also increased, as they people are having that much money that to invest in such quality of cars, so that can be protected, so they can boon to like a good effect on environment, not some harmful effect on environment. So we should move in that manner. Like cars should be good for environment, good for the consumer, good for other road traffic rules. So we should move in that direction. Adding to Yes, your yes, point, Nikhil, adding to your point, and कहीं ना we कहीं ये have भी adding to been, your हो point, रहा I है want कि to tell that. add one point Nikhil, जो कंपनी I- जो ज्यादा प्रोडक्शन के मतलब चक्कर में वो एफिशिएंसी पे ध्यान कम दे रहे हैं, मतलब कार्स वगैरह के भी। तो हमें कहीं ना कहीं मैन्युफैक्चरिंग कार है वो कम पोल्यूशन प्रोवाइड करे। Yes, गवर्नमेंट Yes. ऑफ इंडिया ने अभी एक रूल पास किया है, और ऑनरेबल नितिन गडकरी जी ने कहा है सारे ऑटोमोबाइल जितने भी ऑटोमोबाइल कंपनी है कि आप फ्लेक्स फ्यूल इंजन बनाओ, जो E20 E50 फ्यूल्स बनाए, जिससे हमारा क्या होगा, इंपोर्ट बिल तो रिड्यूस होगा ही, साथ ही साथ में जो पोल्यूशन है वो भी कंट्रोल होगा। हमारा जो एम्बिशन है, जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने COP26 में बोला था, 2070 तक नेट जीरो एमिशन होना चाहिए, उसके लिए जो है रहेगा, क्योंकि ऑयल इंपोर्ट लगातार बढ़ता जा रहा है, पोल्यूशन भी बढ़ता जा रहा है। तो जो भी अल्टरनेटिव Not adding to a point, not only जैसे we CNG should है, move. बायोगैस है, तो ये हमारे प्रोबेबल सॉल्यूशंस है इस टाइम के। और ईवी तो क्या है, एक मिक्स टाइप का हमें चाहिए कि जो पेट्रोल से भी चलता हो और बायोगैस से भी चलता हो, CNG से भी चलता हो, ईवी से चलता हो, जिससे हम फ्यूचर जो पॉपुलेशन राइज हो रहा है उसको भी हम फीड कर और सकते कहीं ना कहीं हैं हमें और ई व्हीकल्स पॉपुलेशन कंट्रोल कर सकते हैं। ई व्हीकल्स के प्रोडक्शन पे भी ज्यादा ध्यान देना चाहिए। Yeah, I get you. Hello. Like you said, e-vehicle production, we have to also invest in the R&D of e-vehicle. Nowadays, we are seeing e-vehicle sometimes higher. So for growth of our automobile industry, we have to
more and more focus on R&D sector of e-vehicles. Yes. We have Okay, one Like those I will startups who are partially interested in restricted. to make the e-vehicles, so those Yeah, मैं startups आपके बात should से come forward सहमत हूँ, पर मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ हम and give them पोल्यूशन के opportunity. टुवार्ड देख रहे हैं कि सिर्फ पोल्यूशन, बट हमारा रिक्वायरमेंट भी देखना चाहिए। अगर कोई कंपनी कार या 4 व्हीलर या 2 व्हीलर का मैंने प्रोस्पेक्ट हमारे सामने ला रहा है, तो इसका मतलब ये है कि हमें कस्टमर रिक्वायरमेंट भी देखना चाहिए। आजकल कॉलेज, स्कूल और एवरी फील्ड विलेज के टुवार्ड आगे बढ़ रहा है, गांव के साइड आगे बढ़ रहा है, तो हम हमारे गांव विलेज जो हमारे देश में विलेज साइड है उसको भी देखना चाहिए, क्योंकि शहर के मोस्टली लोग के पास Yeah, for that only government has फिक्स taken करना चाहिए। initiative. ऊपर से लोन सिस्टम भी अप्लाइड करना चाहिए कि हाँ लोन सिस्टम में ये शिफ्टिंग में इतना मंथ के बाद इतना पेड कर सकते हैं। ऊपर से आप पोल्यूशन की ओर सोच रहे हैं, तो हमें जो पंप होता है पेट्रोल पंप, वहां पे एलपीजी या इलेक्ट्रिकल सिस्टम भी होना चाहिए, जिससे इलेक्ट्रिकल सिस्टम होने के कारण फैसिलिटी ज्यादा मिलेगा और वहाँ रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मैंने लोगों को पता चलेगा कि हाँ ये Yes, Yeah, for I that agree with you. only, जैसे कि yeah, for that only government IOCL है वो has taken initiative to come up with the ethanol blended petrol, for which it will be very in which they will take the agricultural crops and the basically agricultural waste to blend with petrol, so that the carbon monoxide emissions will be reduced, and they are switching on to various sustainable resources like biofuels, biodiesel, hydrogen energy, and for that net zero emission of 2070, which our honorable Prime Minister have told in one of his conference. Yes. As adding to that point, like better infrastructure should be there. Like nowadays, as Nitin Gadkari has Mr. Nitin Gadkari has already stoppage tolls should be there, like so that there should be no loss of time for the drivers and the passengers. And also better road infrastructure should be there. As recently we heard the case of the Mercedes being crashed as a Tata chairman, ex-Tata chairman died due to such conditions. So better roads should be provided. So these kind of situation not happen. As a road, हमें रोड साइड There is also important. I want to add one point. ट्रीज I want to- लगाना चाहिए, जिससे क्या होगा कि एक जो पोल्यूशन कंट्रोल है उसे भी हमें बेटर लाइफस्टाइल के लिए जो वॉइसेस आते हैं गाड़ियों से, वो मफलर की तरह एक काम करता है, जो भी रोड साइड पेड़ होते हैं, तो हमें ट्रीज भी प्लांटेशन करना चाहिए। और I want to add one point. Yeah, I agree with you, friend, but I think we planning should to proceed in install a the- planning manner, because right now we are discussing random points. So instead of going random, we should go line by line. We should discuss about how can the Indian automobile sector can be growth. So growth factors first we should discuss and come to a conclusion. So first we should discuss growth. For that will go for, of course, sustainability. I would like to add one more point. Like in any company growth, there is a mutual relationship between company and customer. So everyone is buying a car, everyone who have money, Okay. but they does not know how to use that car. So company can start online training how to use car, how can we use But brother, manufacturing company cannot do all these things. That is for another we can sector. provide online training. And, मैं आपके बात से सहमत हूँ। I am also accept, but the इसके लिए- company never think about this how to use your car, because every person are thinking about every person have many requirement related to cars या 4-wheeler या 2-wheelers. So manufacturing company always think Yeah, how to manufacturing invest, company cannot go in all these sectors of how to teach people how to गवर्नमेंट drive ऑफ a इंडिया car. इंसेंटिव्स प्रोवाइड कर रही है कि फॉरेन डायरेक्ट Yes, yes. इन्वेस्टमेंट हमारे यहाँ आए और जो है मैन्युफैक्चरिंग Yeah. सेटअप हो। Recently, Yes, our Prime Minister, ऑटोमोबाइल सेक्टर जिससे recently बूम our हो Prime हमारा। Minister also discussed about the in Amrit Kal we should be become self-reliant on automobile sector into tire industry, semiconductor chip industry, supply line strengthening, and steel industry, और हमने which देखा are है supporting the automobile अभी, sector. हमारे ये- ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने जिससे जो है रोक दिया so that the चाह रहे price थे of कि a चाइना में car will be प्रोडक्शन हो और यहाँ पे सेल करें, तो उन्होंने इंपोर्ट बिल बढ़ा दिया टेस्ला की, नहीं आप मैन्युफैक्चरिंग करो इंडिया में But फिर सेल that करो। Tesla We can company do is very going good to point. be open in India also. Like in India also, they are going to open that
company in Bangalore, I guess. So, So the so price first cost to company thing will we be can different. reach is government should increase the FDI and open all the constraints of businessmen to invest in India. So that is the first Let's- point we should be agreeing. Okay. Let Yes, me add uh, one more point. What I want to Yes, add one point. yes, this point will lead to the decrease in the price of in the cost price of the cars, and we can buy. Yes, we all agree on competitiveness that will point. increase. More point. और Competitiveness will ऑल्सो increase. इससे क्या होगा, जॉब क्रिएट होंगी जिसकी वजह से हमारे जो पुअर पीपल है वो और उनके पास पैसा आएगा जिससे उनकी लाइफस्टाइल और इंक्रीज होगी. Yeah. I want to That add will one more also point. added. We can do fueling two ways. For alternative sources, we can do fueling, like we can have CNG and plus gasoline fueling in Brother, automobiles and brother, LNG that thing is for pollution control. First, we are Yeah. discussing growth of automobile sector. Like a growth of automobile in the sector. This will increase because we see in our vehicles we use chip, but chip in production of chip in India very small, like 1%, 2%. We always import chip from foreign countries. So our production, Yeah. our automobile production, Semiconductor if like a we see- Semiconductor supply is a issue in India. India, we see in COVID time we see there's a problem occur because production goes slow down. So we can set So up a plant in India. adding to a point for that point, government is already with the scheme Made in India. So we are initiative towards that Yeah, Made in India project. we have to rapid in this. Yeah, for I have also accepted your point, but it can hear to other person also. So Yes, let's move to the next point. Also, for Yes. traffic So the next control, point is so- quality of life of people. Yes, So I how want can to we increase I the want For to that, quality of life? sustainability resource, natural And, gas, biofuels, Can I sum up and points what H2 we have hydrogen discussed? energies and EVs we can use for sustainability. I think For quality of quality- life can be for increased quality by of- reducing the number of accidents happening on the roads Yeah. nowadays. Actually, we are yes, having. I want we to are add having to that traffic point. Like recently, Transport Minister said like there will be compulsory seat belts for the rear passenger and compulsory airbags should be mandatory for the rear 5 passengers. airbags. In So case of Airbags that have will been traffic- compensated. traffic, और we are Yes, एक पॉइंट मैं और compulsory ऐड करना we चाहता हूँ कि we have We to can suggest also to Stricter people rules should do be a there. we can like also we do a thing हम like देखते हैं कि that. जो कार होती है वो मतलब काफी थोड़ा टाइम के बाद वो पुराने होने के बाद मतलब ज्यादा पोल्यूशन प्रोवाइड करती है, तो हमें लोगों को सजेस्ट करना चाहिए कि वो जो सर्विस होती है नहीं, कंपनी उसके की लिए main, गवर्नमेंट ने Government स्क्रैपेज वहीं से पॉलिसी सर्विस लाई करवाए। है Government have कि जब already भी made एक्सपायर्ड हो जाए वो तो कहीं रैंडमली में जाके मतलब गाड़ी स्क्रैप में जाएगी। That scrappage policy can be वगैरह की discussed service in नहीं infrastructure development part. Yeah, government have already made that policy. And second thing, we are seeing noise pollution. More important point. Government. No. Brother, we are discussing quality of life first. Yeah, Let's discuss that. noise pollution is also affecting the quality of life people in the. क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ेगा जब आदमी के पास पैसा आएगा, फिर वो क्वालिटी आएगा जब कंपनीज आएंगे, सारी चीजें आएंगी, तो हमें इस पे ज्यादा फोकस करना है। Traffic congestion is also As quality of life का जो स्टैंडर्ड है वो अपने आप जीडीपी के संग बढ़ रहा है, तो लोग और ज्यादा टूर एंड ट्रिप करने की सोच रहे हैं, एंड लाइक रिलीजियस टूर एंड रिलीजियस ट्रिप्स आर प्रोमोटिंग एंड टूरिज्म इज प्रोमोटिंग, तो ऑलरेडी कार की सेल भी इससे बढ़ रही है, एंड हमारी क्या कहते हैं लोग भी स्ट्रेस फ्री रह रहे हैं, तो For increasing the quality of life, we should also have a parking space availability at tourist places so that people can park their cars easily. yes. Yeah, that's. If we are talking And for traffic control, so we can also use a road outside of the main town, like we can also generate create a road mapping where That is a very good point. We should have traffic regular park is not. very good point. We should have bypass highways around big cities, like we can we have and highways. Quality concern, We can create can also also separate- parking slot for big cities for traffic control. we can also separate Parking traffic slot, parking area. Guys, I On think other we should give the topics. chance to the Also person discuss. who didn't speak. Hello. yes, One thing we should and be in addition to that,
toilets too many- are major missing part in the road in the current road scenarios. And Yeah, that is a good point. After some Sanitation kilometers, like after facilities. 10 kilometers, and sanitation facilities should be provided. That would be a really quality, good for quality, Yeah. helpful for people. It will Yeah, we very can easy also for all separate people. traffic like heavy vehicles on another roads and light vehicles on another road. So it will lead to place I will think be that, reduced. but In the that district, point is on the not district feasible. level. Infrastructure I will मुझे become लगता है कि जो infrastructure. है It should I think that it- point is not feasible to ro- separate heavy vehicles and light vehicles separately, because in India we have no, space Prashant, problem. it's feasible on the city level. Like there should be pass for bus pass should be given at a designated lane. Like only on the city bus will pass through this. Only ambulance will pass through this. Then there is that is in the mega cities, metro cities. एक्चुअली ये सिटीज में नहीं हो सकता Yeah. क्योंकि सिटीज डेवलप हो चुके हैं ऑलरेडी, उनका प्लान हो चुका है। जो नई सिटीज हैं उनके लिए ऐसा हो सकता New है क्योंकि cities we can जगह भी plan नहीं है। for them. For new cities we can government plan. can- Yeah, I am. Yeah, I for the- want to add something. Some point. Adding to a point, I also Uh, don't think that we can separate that light and heavy vehicles routes. In Jammu and Kashmir, we are having separate. That is the reason we are having less traffic congestion. That is why I But was brother, Jammu and Kashmir population is not so dense, so we can do it there, but not in big Yeah. cities like Delhi, Yeah, Mumbai, cities Chennai. like Delhi, Mumbai. Actually, as per the report, like if you do marking of for the bus, like you have to move in this lane. Then, as recently a minister, Manish Sisodia, told, like it is beneficial for it is benefiting the Delhi. So we are moving in that direction. It's not Yeah, one issue. thing can be And done, about which has also- already been done, is disallowing the heavy vehicles to pass through a city in daytime, like they are Yeah, that restricted is- Yes, yes. entry. सिटीज को बाईपास I think we should move forward to the next point. We are having less time. सबसे बढ़िया Can we पॉइंट ये है कि conclude, सिटीज को friends? बाईपास कर देना। Next point, we can should we discuss sum on up pollution control and environmental protection. Yeah. For that, we are देखो, already ये भी है using कि that sustainable resource. ऐसा ये नहीं है है कि कि- अगर biodiversity, पोल्यूशन biofuels कंट्रोल अगर सोचे तो ये है कि हम रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग भी चला सकते हैं। अगर 4 व्हीलर गाड़ी है तो हम उसके Yes, अकॉर्डिंग भी चला सकते हैं। और पेट्रोल डीजल हम 100% उसका स्टॉप नहीं कर सकते हैं। इसमें ये हो सकता है कि हम पेट्रोल डीजल में जो सल्फर का क्वांटिटी होता है वो IOCL जैसा बिग कंपनी उसको डील ऑलरेडी कर उसको Yes, for that, प्रोडक्ट में for that, सल्फर all ऑलरेडी oil companies have also Grum- come up with Less use one कर रहा है। BS6 तो law. Yeah, improvement in engine quality is also very important Improvement factor. in fuel also We we have want. Improvement in fuel also we natural want. gas- BS6 BS6 engines and BS6 reduces the emission में of आना NOx बहुत and SOx. एफिशिएंट है। Up सबसे to 10 ppm levels we are क्लीनर फ्यूल इस reducing समय का oil. जो है वो नेचुरल गैस है, उसको यूज में लाना बहुत जरूरी है। और आई वांट टू ऐड वन Natural पॉइंट, ऐसा gas, नहीं है yeah, कि yeah. इलेक्ट्रिकल Friends, व्हीकल्स it's नहीं है, a इलेक्ट्रिकल task, we व्हीकल्स should- आर देयर, बट Yeah, electric problem is vehicle is that a very good option. चार्जिंग स्टेशन नहीं है हमारे Yeah, but for इंडिया में that ज्यादा। electric vehicles, we IOCL need is- lithium. Yeah, Lithium is very IOCL rare. we can Lithium use is very IOCL. rare in our IOCL earth. has installed more than We- 1,000. We also have We a need stations import. technique across of the ethanol country. blending. IOCL is planning to install Ethan- 10,000 So battery EVs fuel is not And- possible I think in the Ethanol blending science is a good phase. option. And also- Ethanol blending and- reduces. And also, I would like to add a point here, like policy as odd that even more formula will in the install mega their cities should be charge implemented. battery Like it's a fuel good station. it is a good thing Battery for mega cities like Delhi. Odd even formula will work. Yeah. And we can Yeah, also we think should- that. We for should also traffic plant control and some trees congestion. on the sides of road to absorb the pollution, and also use sound absorbers around the roads so that noise pollution does not disturb the people living beside the roads, like residential Oh, colonies. No, and yeah. all. that we can set up that That one comment unit of- You say I am partially correct. We can also use a roadside tree which is absorb hydrogen gas and calcium, chlorine gas, and Yeah. also gives provided oxygen gas. Yeah, very good point. Another thing we can do at manufacturing level. Another thing which we can do at manufacturing level is use of hydrogen fuel cells. Hydrogen fuel और cells विलेज एरिया decreases We the can use pollution. hydrogen energy, bro. the quality of petrol and diesel is not checked, so I think नहीं, quality of diesel and of petrol petrol depends on the depend on I want technology to- of engine we have. I want to add Yeah, one but point. We I can want see to add one lots of people are mixed with the other material in the petrol and diesel, blending of which naphtha. That I want to add one point, friends. in the environment. I want to add one point that battery technology will not come within a night. So as far as the environment is concerned, we can use fueling like CNG
Ethanol LNG in the blended vehicles, fuel. ethanol blended biofuels, so that in that the normal vehicles to e-vehicles, we can have less pollution in the environment. Okay, Yeah. okay. Yes. Yeah, that is a very Like good our point. population is so big, we cannot depend on only one source. Mhm. Yeah, there should be Yeah. multiple alternative for that. We should first step out for an alternative fuels like biofuels rather than going for EVs and all, because Yeah, it's like or very like costly producing lithium-ion battery and all. Yeah, like if Indian automobile industry provide any car, like it is able to move with both like a fuel and electric. That will be that that will Yeah, that that will be most acceptable and very useful for us, yeah. because we cannot depend upon one things like our Like four-wheeler or two-wheelers only sometimes use petrol or diesel. But this is a more functional in our cars, yeah, our four-wheeler. It means it is also working to use electrical, and it can also when discharge them. We can also use less amount of less use petrol or diesel, yeah, anything. But it can also be applicable for CNG. You can also जैसे हम CNG और उसको भी अगर एक फोर व्हीलर है तब उसमें अगर मल्टीपल फंक्शन है, इलेक्ट्रिकल से भी वो चार्ज होकर चल सकता है, तो हम पेट्रोल और डीजल को रिक्वायरमेंट को बहुत कम कर सकते हैं. But it is not possible overnight. Like it needs a very long run to go with it. Like EVs is not possible in a coming day. Yeah, but अगर possible हो तो आदमी सोच सकता है कि producing lithium-ion battery is itself a challenge for us. No, yes, we do not have. Like we can see in the America, China, you are using an electric vehicle, but in India they are not invested in so much. Because lithium metal is very trace in our India. So yes, friends, I would like to add a point. Like I agree that lithium is not that much there in India, but we are having so much ample amount of aluminum reserve in our country, and IOCL is investing so much amount in aluminum air batteries. Yeah. So there are That is a batteries very that will be innovative coming solution. there are batteries that will Very be coming innovative in. solution. Aluminium-based batteries are One very more good. alternative for lithium-ion alternative. battery is the sodium-ion battery. Also, Sodium can be the battery. alternative for We can also lithium-ion use it battery. in the green hydrogen energy. That's very good calorific value, and it will be more useful. So I think we should now move to the infrastructure development part. Yeah, infrastructure. Yeah. So for As, infrastructure development so part, we should for- increase the infrastructure of charging at each 5 kilometers, so that e-vehicles e-vehicle usage in the citizen increases. Another thing is investment in construction of road, which increases mileage of vehicles, because having a road which is very bumpy and full of but that pits, it decreases the mileage. road thing we have already discussed in that earlier points. If we improve the roads, then there will be traffic control, and Yeah, there will be less congestion if we increase the width of the road. Like a big mobile industry, their service center in not every city. So if company establish their service center in every city, approximately 20 to 30 kilometers, that will be good, because that helpful to customers. Yeah. So service Yes, we can. service system and charging system, and also traffic is also control 3 point. जैसे charging system अगर हर 2 किलोमीटर पे हो और वहाँ पे every 2 kilometers, we can provide like approximately 20-30 kilometers. Yeah. Friend, I have one policy that if the car is like, if the car is more than 10-year-old, then you cannot run it on the. Government have provided that rule in the big cities, but it is not applicable to the village area, because they. Yeah. But village area doesn't have that much of vehicles, right? So Yes. So it is mostly for bigger cities now. They only use when they requirement, when they need only. So we yes, can. infrastructure development like no stopping for tolls are being developed by the current government, and this kind of infrastructure should be facilitated more and more. We are talking about infrastructure development of Indian mobile industry. So that's in not control Indian mobile industry.
Indian automobile Infrastructure industry. is No? also there. Infrastructure is also So how can we increase the infrastructure of automobile industry? So we can talk in this point. Yes, as we are the professional for the, we have to increase the automobile sector. Like we are not some company guy, we can be bureaucrats. So we can be, हम लोग को जो टॉल्स वगैरह है वो अच्छे से बनाने पड़ेंगे, लाइक जिसमें हमको रुकना ना पड़े. आजकल ऐसा हो रहा है कि बिना रुके ही निकल जाते हैं, और ऐसा थोड़ा भी जो भी रुकना पड़ रहा है उसको भी हम कम कर सकते हैं. traffic lights. We are delaying too much in that traffic lights. We can make such kind of delays, such kind of traffic lights, so that delays minimum. So guys, If I the think we traffic should- is the more, then delay will be the more. Yeah, like an infrastructure, like as I have seen in the like Allahabad district, like as a for good company like Rajdoot, Bullet. Only one dealer is there, and their service and their servicing cost is so high. So if company provide more service sector, it is also beneficial. Yes, that. I think we should sum up some of the point that we discussed and move toward the Yeah. conclusion. Last 2 minutes, please summarize and then we conclude. Yes. Okay. Okay. So Let me firstly we have to go for manufacturing side. Let me summarize it. Okay. Okay. So, Okay, Nikhil, you go forward. So our topic was the growth of the industry, growth of the automobile industry. So I want to say that the industry must be outside so that the noise and air pollution won't be there. And for more number of production, we should take care of the workers of industry also, like 2 or 1 holiday in a week. And production can be in the, as we know, production can be in the petrol, diesel, and like electric vehicles. So for Let's the, give those points that we discussed already. Like in the growth and benefit to industries, what we discussed, like we should be self-reliant and supply chain cost will decrease, and this will decrease the cost price. That we first point that we discussed. Then we discussed like there should be subsidies given by the government, and investment by foreign companies should be increased by government, and investment should be done by the government. So these are some of the points that we discussed in growth This and will benefit of increase industry. And increase another point competitiveness. you would like to add? I want to add Vehicle one more company increase उनमें भी invest करना competitiveness. चाहिए. I want to add one more point. We discussed that we should invest on R&D of automobiles, and Yes, also R&D. we for should see the environmental- customer for requirements. environmental- We should see the for- customer requirements, and we will do the production as the requirement is there. And apart from Yes, that, better yes, road infrastructure R&D also is we have important. discussed. And for Better road sustainable infrastructure we have also discussed. Provide a good amount. That of will come. like not 1% or 2%. That will come at the last, no? The infrastructure point. For sustainable environment growth also, IOCL It's is the also last in growing from BS4 to BS6, and we will also and contribute in this in the R&D, sir. Yes, and in the second part of that our group task, it was like quality of life. How we will increase quality of life. So first point that I have ruled, like stricter rules should be there for safety belt and something airbag kind of things. And another point that I wrote, like disallowing heavy vehicles on the public on the city roads. During daytime. During daytime, there should be parking. There should be bypass. There should be sanitation facilities available within some kilometers. And these were some of the points that we wrote in quality of life. And any other Now- point that I Now forgot. coming to the pollution control and environmental protection part, we should have Yes. BS6 engines which will reduce emissions of NOx and SOx into the environment. And we should also introduce e-vehicles with the incentive by the government to the consumer as well as industry, which will make I it would like cost to add one more effective. point. Government And should third point government is planting trees on sides of a Yeah. road to absorb the pollution. Fourth thing is using sound absorbers around roads so that noise pollution can be reduced. Fifth thing is usage of hydrogen fuel cells to compete with the lithium-ion batteries, and aluminum based batteries are also a very good alternative. Apart from that, ethanol blending is also being done, and the percentage of ethanol blending is targeted to increase up to 30% in coming years. And recycling of vehicle, usage of CNG and LNG are the points that we have discussed. You should invest. And also we discussed about odd even formula here. Yeah, Yeah. Odd even and formula. also we We have can to go use for other aluminum based batteries. alternative Yeah, that- sources which are Which are less coming into the costly. market.
market that CNG, LNG, biofuels, Yes. biodiesels. We can Yeah. invest on Yeah. alternative sources for. Yeah, that point is already included. And we have to Now- install the more battery stations on the fuel station of the like IOCL. Now, BPCL. And service center of the vehicle. And I would like to add one more point. We cannot always restrict the odd even formula for driving the car. We can provide alternative sources for them, because everyone needs Yeah. any time. Okay, now Yeah, I one think, point we can you- also add you that- have to Use now. public transport. Are you ready for conclusion now? Consensus based conclusion? Can we Yes, are conclude? Yeah. we are doing that only, sir. We are concluding and No, coming on we are conclusion. summarizing. No, conclusion is to be done once it is told. Otherwise, this is all summary you are doing. Right. Now, please We are conclude. summarizing. आप समराइज कर रहे हो ना अपने पॉइंट्स? अभी तो yes, sir. कंक्लूजन करो Yes, और yes. मेरे को बताओ क्या कंक्लूजन पे पहुंचे आप, कंसेंसस क्या बनाया आपने, ये बताइए. और only one fellow will conclude and nobody else will then speak in that. Only one. Okay, sir. I think Rishika should conclude. According to me, for the infrastructure part, we can use the road construction. We can go for road construction, better roads, parking spaces, and for compulsory seat belts, and for bypass highways of big cities, and we can allow heavy vehicles during night only and not in the daytime, and we can use an alternative fuels like ethanol blended petrol, and biodiesel, biofuels, and hydrogen energy. And for EVs, we are switched to aluminium-based batteries and not lithium, because lithium is very rare on the earth, and so we are switching to aluminium-based batteries. And and we have discussed that for each 5 kilometers, for each 10 to 20 kilometers, we will be using EV, electric vehicle charging stations for that, for the sustainable development and growth. And so, thank you. Okay, so let me give you the feedback of your discussion. First, let me tell you that you as a group, you were not very I'll say smooth discussion. You were not doing very smooth discussion. ये group discussion जैसा लग रहा था, group task कम लग रहा था. मतलब आप you guys were in haste to give your points actually, and that is not required. Group task में क्या होता है कि अगर आप दो या even if you give 2-3 good points, even then you can score very good in this, and let others also speak, and let others also give their points. So that is how you are to participate in group task. Some of you were giving good points, that is they are noticed actually, like whenever you will say okay, we'll have like Manish started, but Manish, you started at very slow pace. Introduction was at very slow pace. आपको अगर आपने स्टार्ट कर दिया है डिस्कशन, तो आपको एक पर्टिकुलर पेज पे उसको बताना है, अदरवाइज बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा. इनफैक्ट आपने शुरू का टाइम बहुत यूटिलाइज कर दिया लोगों का, और क्योंकि ग्रुप टास्क है तो पीपल विल नॉट इंटरप्ट यू, बट देन इट इज अ वेस्टेज ऑफ टाइम फॉर एंटायर ग्रुप. So if you want to start, the person who wants to start should provide the summary of the talk, summary of the task, and then in which direction you want that discussion to go, that you should say, and then open the house. Ajit talked about petrol pump, Rishika ethanol blended fuel, Nikhil talked about road infrastructure and accident also he mentioned. So all of you mentioned one or the other important points which are noted and which provide you credit also later on. So here in group task, there are two things. One is overall group marks. So overall group, if it is behaving properly, everybody is going to get a good score. But if overall group mein this is chaos, then everybody is going to lose. Number one. So that means your fate is connected with the group. So you need to support. That is the reason. Second is your own contribution. Yes, in the interview, sometime they tend to ask you the question which you have discussed in task in the interview also. And your individual point which you have mentioned, like Redmi, I don't know what is your name. Redmi, what is your name? Redmi, आपका नाम क्या है? आप अपने नाम के साथ एंटर किया करें so that I. Sir, Abhinav Tiwari.
सर हाँ। वो भूल गया मैं जल्दी से जुड़ने के टाइम हाँ जी, 8:14 पे जोड़ रहा एक था। मफलर वाली बात की थी। अब वो मफलर वाली बात वो इंटरव्यू में पूछ सकता है कि हम्म, मफलर वो क्या बात करने की ट्राई, व्हाट वर यू ट्राइंग टू से मफलर ट्री प्लांटेशन, व्हाट वर यू सेइंग इन दैट? सर वो जो पेड़ लगाते हैं रोड साइड में, तो हाँ। वो क्या करता है, एक वॉइस को एब्जॉर्ब करता है, तो एक मफलर की तरह एक्ट करता है कि वॉइसेस ना जाए, और एक रोड साइड जो रेजिडेंशियल हाउसेस होते हैं उनके लिए वो होता है सर। आप मफलर तो एक आपका जो डैम्पिंग की तरह से काम करता है, नॉइज को एब्जॉर्ब कर लेता है। ये कहाँ पढ़ा है आपने मफलर? सर ये मैं जनरल साइंस देख रहा था, तो एक बार मैंने देखा था ये सारी चीजें। मफलर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपकी ब्रांच क्या है इंजीनियरिंग की? मैकेनिकल सर। हाँ, मैकेनिकल में आप मैकेनिकल वाइब्रेशन में इसको पढ़ते हो, मफलर कंसेप्ट। तो जब कोई हम्म। टेक्निकल जार्गन यूज करो तो उसको एक्सप्लेन भी करो, अदरवाइज जनता को पता नहीं चलेगा क्या बोला आपने। जैसे अच्छा, आपने अच्छा। मफलर का कंसेप्ट तो डाल दिया, मफलर एक वर्ड यूज किया आपने, हम्म। पकड़ लेगा मफलर, आपने वर्ड यूज किया, लेकिन वो बाकी जनता उसके ऊपर उसको उनको पता नहीं चला मफलर है क्या। तो वो नॉइज को डैम्प करने के लिए, नॉइज को खत्म करने के लिए होता है। वो आपसे इंटरव्यू में पूछ लेगा कि आप अभिनव बता रहे थे मफलर के बारे में, क्या पॉइंट था आपका, जानते हो? और इंटरव्यू मफलर की तरफ भी चल सकता है फिर सारा, राइट? तो आपको पता होगा मैकेनिकल इंजीनियरिंग मैकेनिकल वाइब्रेशन में जाएगा, फिर मफलर में जाएगा, फिर डिस्कशन करेगा। दैट इज नॉट बैड, गुड थिंग। फिर उसी तरीके से प्रशांत ने पॉइंट्स बताए, जैसे आपने जीडीपी का पॉइंट भी बताया, and then you said that let's प्रशांत entered with coordination के एक एक करके पॉइंट बताते हैं अपने और लिखते चले जाते हैं। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योस नहीं फैलना चाहिए। तो आपके ग्रुप में क्योस तो था, ये बात तो थी कि क्योटिक था। अब दूसरा, आप में से जो लोगों ने पार्टिसिपेट किया है, जैसे मनीष ने, आई थिंक मेरे को मनीष ने बोलना स्टार्ट किया। मनीष का ये था कि बोल रहे हो मनीष, यू आर नॉट टू लाफ इन द टास्क। अगर हंसी वाली बात भी हो तो लाफ नहीं करना है वहां पे, अदरवाइज नंबर कटते हैं उसमें। अगर मजाक वाली बात भी हो जाए को बीच में, कई बार कुछ कैंडिडेट्स होंगे वो फनी सा काम करेंगे अंदर बैठ के, तो आपने हंसना नहीं है वहां पे। अगर हंसोगे तो नंबर कट जाते हैं उसमें। सो यू आर टू नॉट लाफ, और यू आर टू कंट्रोल योरसेल्फ, एंड बड़े प्रोफेशनली ही आपको बात करनी है वहां पे। तो एक मनीष ने बोलना स्टार्ट किया, बोला उसने। वैसे ही कुछ नए जो मेंबर्स हैं, आई थिंक ऋषिका का भी ये पहला था, अजीत ने भी बोला, अजीत पार्टिसिपेटेड। निखिल को भी कुछ टाइम हुआ है, 2-4 जीडी किए हैं इसने, निखिल ने अच्छा पार्टिसिपेट किया है। प्रशांत ने बैलेंस्ड व्यू दिया है। मंसूर ने पहले से ज्यादा दिया है, मंसूर पिछले जीडी पे कुछ भी नहीं बोला था, अभी उसने पहले से ज्यादा दिया है। बाकी जैसे अगर आप अपना विजिबल नहीं होंगे ना, तो मेरे लिए बहुत मुश्किल होता है फीडबैक देना, बिकॉज आई कैन नॉट सी व्हाट यू आर स्पीकिंग एंड हाउ यू आर स्पीकिंग। तो आप ये जरूर करना कि जब जीडी जीटी पार्टिसिपेट करें तो विजिबिलिटी रखना अपनी। वो इसलिए इंपॉर्टेंट होता है कि मेरे को पता लगे आप डायनामिक कितने हैं, क्योंकि ग्रुप डिस्कशन टास्क में बोलना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि तुम किस तरह से बोल रहे हो। अब असुस्त होकर बैठे हो कि हंस रहे हो, कि अब यू नीड टू बी एक्टिव। एक्चुअली बॉडी पोस्चर आपका एक्टिव होना है। जैसे ऋषिका, आप बहुत ही कैजुअल बैठी हैं, आप बड़ा सुस्त होकर बैठी हैं, यू नीड टू बी एक्टिव। ऋषिका, सीधे होकर अगर आप बैठेंगे, आप बिल्कुल स्ट्रेट, वो दैट पर्टिकुलर पोस्चर इज रिक्वायर्ड, नॉट कि आराम से बैठे हैं, नॉट दूर। और आप जब अपना विजिबिलिटी मेरे को हो तो ओनली चेहरा, मनीष का ओनली चेहरा नजर आ रहा है। आई कैन नॉट टेल एनीथिंग अबाउट द बॉडी पोस्चर ऑफ मनीष ऑल्सो। चेहरा बहुत, डोंट सिट वेरी क्लोज, सिट एट सम डिस्टेंस सो दैट यू नो सम पार्ट ऑफ योर बॉडी इज विजिबल। एटलीस्ट आई कैन गिव यू फीडबैक कि तुम किस तरह से बैठे हो, किस तरह से हैंड मूवमेंट है तुम्हारी, आपके आई मूवमेंट्स कैसी हैं, आपका बॉडी मूवमेंट कैसा है, एक्टिव मोड में हो कि नहीं, ये बहुत जरूरी है। जीडी जीटी के अंदर आप जो 15-20 मिनट अंदर रहोगे, बी एक्टिव और सबकी तरफ देखो, सबके साथ नॉडिंग करो, बात करो। वो 15 मिनट आप ऐसा करना है। ये था आपका ओवरऑल। आपको पार्टिसिपेट जब करना है तो जल्दी में नहीं आना कि मैं बोलूं, जीटी में नहीं करना है वो। तो एक तो ये था आपका फीडबैक। दूसरा, जो आप में से कुछ लोगों ने बोलना स्टार्ट किया वो अच्छा है। मनीष, आपको वो अभी उसको ऐसा लगेगा बोल तो रहा है एक, लेकिन काम की बात नहीं बोल रहा है या प्रोफेशनली नहीं बोल रहा है। ऋषिका ने कम बोला है। बीइंग गर्ल शी गेट्स एडवांटेज, वो चाहेंगी तो एंटर मार सकती हैं जीडी में, लेकिन ऋषिका ने बहुत रिस्ट्रिक्ट किया अपने आप को, बहुत ज्यादा इन्वॉल्व बोला नहीं। शी शुड कम अगेन एंड अगेन। निखिल बोलता रहा, वो सही है। अजीत ने भी पॉइंट दिए, वो भी सही है। प्रशांत ने बैलेंस सा इनपुट दिया है, दैट इज ऑल्सो देयर। एंड बाकी प्रशांत, जैन, सौरभ, सुनील और अभिनव ने बात किया है, इनपुट दिया है, लेकिन यस, आई वांट यू टू बी विजिबल सो दैट आई कैन गिव यू प्रॉपर फीडबैक आफ्टर दैट। और मंसूर, आपको थोड़ा सा अभी और बोलना है, पिछले से बेटर है, लेकिन अभी वो लेवल तक नहीं पहुंचे आप। हाँ जी प्रशांत। I will improve also myself. Sir, I have one doubt. Right, so now let me tell you the topic। देखो जरा दिया क्या था उसने,
जो केस स्टडी देता है ना, बहुत लंबी सी केस स्टडी, उसके एंड में वो आपको बोलता भी है, टास्क भी देता है कि तुम्हें करना क्या है, किस तरीके से तुम्हें पार्टिसिपेट करना है। तो टास्क ये था, टास्क था कि आप सजेस्ट करो ग्रोथ का रोड मैप इंडियन ऑटोमोबाइल सेक्टर का। फोकस किस पे रखना है? ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन एंड बेनिफिट टू इंडस्ट्री, प्रोडक्शन कम ना हो, गाड़ियां बनती जाएं। एंड दूसरा था आपका क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ पीपल, लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ को भी आपको ध्यान में रखना है, पॉल्यूशन को भी कंट्रोल करना है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात होनी चाहिए, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन होना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होना चाहिए। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये टॉपिक को तुम डिवाइड कर सकते थे आसानी से। Okay friends, the task given to us is related to Indian automobile sector and what will be the growth trajectory, and इसके अंदर तीन चीजें इन्वॉल्व हैं। पहला, इंडस्ट्री की प्रोडक्शन रेट, किस चीज का? ऑटोमोबाइल का। इंडस्ट्री का प्रोडक्शन रेट कम नहीं होना चाहिए, इंडस्ट्री शुड ग्रो, ऑटोमोबाइल सेक्टर। नंबर टू इज इंफ्रास्ट्रक्चर पार्ट, जो गवर्नमेंट बनाएगी। गवर्नमेंट ने रोड बनाने हैं, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, गवर्नमेंट ही नहीं, IOCL वगैरह कंपनीज भी इन्वॉल्व है उसमें, IOCL, all these oil based companies, they have to create the charging infrastructure if e-vehicle is to be given, or batteries. So companies should come, government should provide conducive environment, roads, government is to provide roads. ये दूसरा पार्ट उसका था। तीसरा, फ्यूल, कार्बन को रिप्लेस करना है, तो पोल्यूशन कंट्रोल तो उसी से होगा, कार्बन से। तो पोल्यूशन कैसे कंट्रोल होगा? फ्यूल आपके पास, आपने कईयों ने नाम लिए, बायो है, ब्लेंडेड है, हाइड्रोजन की बात की, इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात की। सो वो एक कैटेगरी है। सो फ्रेंड्स, द टास्क व्हिच इज गिवन टू अस कैन बी डिवाइडेड इनटू कपल ऑफ वर्टिकल्स, couple of heads, and I think we should discuss one by one each head. First head I think we should use is related to pollution, fuel replacement. Carbon is not sustainable, so let's talk about fuel replacement. उसमें तुम लोग ई व्हीकल की तरफ चले जाते हैं, हाइड्रोजन की तरफ जाना है, ब्लेंडेड की तरफ जाना है, एक एक आदमी एक लिख के एक पॉइंट जोट डाउन करता है। So friends, are we all ready now? Are we all on the same platform that fuel should be replaced by this? और कैसे उसको रिप्लेस करना है? ओवरनाइट तो गाड़ियां, ई व्हीकल नहीं आ सकते, प्रोडक्शन रेट बंद थोड़ी कर सकते हैं, लोगों ने खरीदना बंद कर देनी है। तो आपको प्रोडक्शन के हिसाब से भी सोचना है कि कितनी % गाड़ियां हम निकालें, कितना हम गाड़ियों को कैसे रोल आउट करें, पहले बाइक्स निकालें, पहले कार निकालें, कैसे करें उसको। दैट वाज फ्यूल रिलेटेड डिस्कशन। उसके बाद आपका डिस्कशन हो जाता है इंफ्रास्ट्रक्चर। चलो गाड़ियां हैं लेकिन रोड कहाँ है? अभी 140-50 करोड़ की पॉपुलेशन है, लोगों के पास तो गाड़ियां भी नहीं है अभी सबके पास, जब आ जाएंगी तो कैसे होगा? रोड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, उसका डिस्कशन करो। एंड मैं चाहता था कि आप कहीं ना कहीं मास रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम की भी बात करो। जब लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ से बात आई थी, जब लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ की बात आई, तो शहरों के अंदर, दिल्ली के अंदर कितनी गाड़ियां ले आओगे? बॉम्बे मेट्रोपॉलिटन में कितनी गाड़ियां ले आओगे? तो पूरे इंडिया को डिवाइड करो ना एज फार एज इंफ्रास्ट्रक्चर इज कंसर्न। तो फ्रेंड्स, लेट्स सी, मेट्रोपॉलिटन जो सिटीज हैं उसमें मास रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम लेके आते हैं, जैसे मेट्रो हो गया, मोनोरेल हो गया। मेट्रो एंड मोनोरेल आर द मास रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो शहरों के अंदर वो लेके आओ कि लोगों को बहुत ज्यादा अपने व्हीकल में कम्यूट ना करना पड़े, तो शहरों में वो लेके आओ। और उसके बाद आपका आ गया इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड आ गया, रोड्स को कैसे डेवलप करना है। तो जो हम कंट्री साइड है या छोटे शहर है, उनमें ये चीज दी जा सकती है। उसके बाद कंपनीज की ग्रोथ के लिए आपको सजेस्ट करना पड़ेगा कि कंपनी को, गवर्नमेंट को एनेबलिंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना पड़ेगा। ई व्हीकल्स वगैरह के लिए जब वो ट्रांजिशन फेज में है तो उनको प्रोवाइड करनी पड़ेंगी चीजें। बैंकिंग सिस्टम को बीच में ले आओ। इस तरीके से आप अलग अलग वर्टिकल्स में इस पूरी केस स्टडी को डिस्कस कर सकते थे। That is how it should have been done. So ज्यादा मार्क्स जो तुम्हें मिलते हैं ना यार, रिटन एग्जाम की बात कर लो, अगर तुम्हें ऐसे भी लिखना हो ना, और तुम ऐसे लिखना स्टार्ट कर दो ऐसे पॉइंट वाइज, तो नंबर नहीं मिलते। डिवाइड स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है। स्ट्रक्चर प्लीज बनाओ। स्ट्रक्चर क्या होता है कि किन डायरेक्शन में मेरे को डिस्कशन करना है, और स्ट्रक्चर तो इस टास्क के अंदर स्ट्रक्चर वैसे दिया हुआ था। सो स्ट्रक्चर वाज ऑलरेडी देयर इन द टास्क। एंड में उसने बोला ये बात करो, तो स्ट्रक्चर वाज ऑलरेडी देयर, आपको पकड़ना था, उस पर डिस्कशन करना था। एक खत्म हो गया, अब दूसरा चलते हैं, दूसरा खत्म होगा, तीसरा चलते हैं। ऑब्जर्वर जब वो चीज देखता है ना कि ये चल रहे हैं, अपने हिसाब से इन्होंने काम चला रखा है, तो वो उससे बहुत इंप्रेस होता है कि आपने बड़े मेटिकुलसली सारा डिस्कस कर लिया। सो एंड में आप ये बोलते हैं कि ओके, सो फ्रेंड्स, आई थिंक वी हैव डिस्कस्ड दिस टास्क इन couple of verticals and couple of heads. So we will now summarize one by one. So as far as the fuel is concerned, we have understood that fuel is non-sustainable, carbon based is non-sustainable, but it cannot be replaced overnight, as even our Prime Minister said by 2070 only net zero carbon will be attained. So it cannot be overnight replaced. So let's keep a target. What percentage can be replaced every year or something like that? So that way electric vehicle will come. For that, banking system should provide some kind of loan facility to people who are motivated. Incentive is given to them to purchase e-vehicle. Government should come forward.
ऐसे ऐसे आपको डिस्कस करना है। सो ऑल फ्रॉम माय साइड, एनीथिंग यू वांट टू आस्क और टेल? Yes, sir. I want to ask that who should conclude it? Conclusion will कंक्लूजन give मैंने आपको more पहले marks. बताया था कि जो शुरू से मेटिकुलसली लिख रहा है वो कंक्लूड कर सकता था, जो शुरू से लिख रहा है मेटिकुलसली। अगर आपको कंक्लूजन करना है तो शुरू से स्ट्रेटेजी ये बनाओ कि साहब मैं लिखता चला जाऊंगा, मैं कंसेंसस बनाता चला जाऊंगा बाकी जनता में। ऐसा कोई करेगा नहीं, आपके पास एक बहुत ब्रह्मास्त्र है ये, आप इस चीज को यूज कर सकते हैं। आप शुरू से लिखते चले जाओ। ओके फ्रेंड्स, सो लेट मी नाउ जोट डाउन द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स व्हिच वी डिस्कस्ड। आप वो इनिशिएटिव खुद से ले लो, शुरू से ले लो। अब जब शुरू से इनिशिएटिव ले रहे हैं कि मैं जोट डाउन कर रहा हूं, मैं लिख रहा हूं, पेन और पेपर मिलेगा आपको, कोई नहीं करेगा वहां पे, आप करो। आप करोगे तो फिर एंड में ऑब्वियसली वही करेगा, ठीक है प्रशांत आप कंक्लूड करो, बिकॉज यू आर राइटिंग दीज थिंग्स फ्रॉम द बिगिनिंग। ये करना है। Sir, how should we when will be on conclude GD, sir? Next यस GD. यस मनीष, Next GD. नेक्स्ट जीडीजीटी हाँ sir. वो आपको व्हाट्सएप में मिलेगा, मैसेज मिलेगा एक दिन में। sir how should we sir how should we conclude How I can any improve topic? myself and next? How can I improve myself? नहीं अभी करो, बोलना स्टार्ट करो बस, पार्टिसिपेट करो। How many, Sir, how I many have one GDGTs doubt. we can attend? There is no limit, जैसे आपके पैकेज में है, आई थिंक 5 is the limit, but you can participate more, just keep doing Sir, it. Sir, Sir, I can participate sir, in I the have two Okay, doubts. one by one please. Sir, please give me chance. हाँ जी, go ahead. सर आपने बोले कि समराइज करो, तो समराइज में सर जैसे कि मनीष का मैंने देखा कि एक पॉइंट बोलकर फिर भूल गया, जब दूसरा को समराइज करने आया तो उसी में वो ऐड करने लगा। सर समराइज में एक बंदा को एक ही बार चांस मिलना चाहिए ना? नहीं, समराइज का मतलब होता है आपस में सारी बातें हम इकट्ठी कर लो फिर मेरे को बताओ, ये मैंने बोला था। सर वही एंड में सर कंक्लूजन कैसे करते हैं सर? कंक्लूजन हमें क्या क्या बोलना होता है? कंक्लूजन कंक्लूजन हम बोलना क्या क्या होता है सर हमें कंक्लूजन में? कंक्लूजन में ही जो मैंने एंड में बताया, अलग अलग वर्टिकल में जो भी डिस्कशन हुआ बता दो, सॉल्यूशन दो मेरे को, ये होता है कंक्लूजन। गिव मी द सॉल्यूशन, ये होता है। और कंसेंसस बेस्ड होता है, सबका मिलकर होता है। और सर डाउट ये है कि सर दिस इज माय फर्स्ट जीडीजीटी, सर नेक्स्ट कितना दिन के बाद अटेंड करना चाहिए? डिपेंड करता है आपका इंटरव्यू कब है। अब जिनका सितंबर 25 से पहले है उनको हर दूसरे तीसरे दिन कर लेना चाहिए। मेरा सर अक्टूबर 10 अक्टूबर को है। कोई बात नहीं, करो आप 3 दिन के बाद लगाया करो मनीष। ठीक है, आफ्टर 3 days लगाओ। हाँ सर, जैसे जब कभी आज हॉलीडे है, मैं सोच रहा हूँ नाइट में भी कर लूँ क्या, अगर स्लॉट बाकी हो तो? नहीं एक दिन में 2 नहीं करने हैं। और सर मेरा एक इश्यू है कि सर जैसे कि पॉइंट्स बता दिए पर सर उसको ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाता हूँ सर ऐसे। वो सुनील पहले तो विजिबल हो जाना है और बोलना स्टार्ट करो, पहला स्टेज बोलने का है। ओके सर। हाँ सर, जैसे कभी जैसे कोई इंट्रोड्यूस करता है, जैसे आज मनीष ने किया, तो सर आज सब लोग ऐसे यूज करते हैं सर, माय नेम इज मनीष, बट सर ये चीज थोड़ी समझ में नहीं आती। लाइक मनीष विल गेट अ चांस टू नेम, मतलब उसका अपना नाम बताने का चांस मिल रहा है, बाकी लोगों को चांस ही नहीं मिलता। एड्रेस लाइक माय फ्रेंड इज टोल्ड, माय फ्रेंड इज टोल्ड, बाकी बताने की आई थिंक इंट्रोडक्शन में नाम बताने की जरूरत नहीं है। नहीं सर, बता भी दे तो मेरा याद एक नहीं रहता है। सर मेरा एक पॉइंट है सर, मतलब ऐसा कोई टॉपिक मिल जाए जिसके बारे में पता ना हो सर, फिर उस पे कैसे बोलना है, जिसके बारे में पहले से कुछ ना पता हो। यार देखो, सारे एक ही जगह पे होते हैं, सब लोगों का एक ही लेवल होता है जितने भी हैं, तो वो उसको पता होता है। कोऑर्डिनेटर ऐसा कोई टास्क आपको देते नहीं है जिनके बारे में आप कुछ करना पाओ, उनको भी पता होता है कि टास्क ऐसा दो जिसपे बच्चे बोल भी पाए। ऐसा टास्क क्यों देगा जिसपे बोल ही ना पाए? ऐसा नॉर्मली होता नहीं है, लेकिन अगर ऐसा हो जाए तो बाकी सारे लोग उसी कैटेगरी में होते हैं, तो दे पार्टिसिपेट, नॉट अ प्रॉब्लम। आप ना करो, आस्ता आस्ता चीजें आपको बहुत सी चीजें क्लियर होंगी व्हेन यू स्टार्ट पार्टिसिपेटिंग। ओके सर, जैसे इंट्रोडक्शन में किसी ने अपना स्ट्रक्चर नहीं दे पाया, हमारा जीडी कैसे जाने वाला है, अगला आदमी जीडी दे जाने, सकता है, अगला आदमी दे सकता है। ट्रबल नहीं, आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। हाँ ऋषिका, सर जीडी में मार्क्स कैसे देते हैं? मतलब सबको इंडिविजुअल देते हैं और एज अ ग्रुप? हाँ इंडिविजुअली में मार्क्स होते हैं, लेकिन जीटी में कलेक्टिव और इंडिविजुअल दोनों को करते हैं, वो कंसिडर करते हैं। अगर जीटी, मैंने बताया ना कि जीटी अगर तुमने पार्टिसिपेट ढंग से नहीं किया, सबके नंबर नीचे जाते हैं, पर सबके बराबर नहीं होते, नंबर बराबर नहीं होते जीटी में। पर इम्पैक्ट सबकी डिस्कशन, जीडी में क्या है, सारे बेकार गया बिल्कुल, लेकिन एक बहुत अच्छा बोल रहा है तो उसको नंबर हाई मिल जाएंगे। ग्रुप का नहीं देखा जाता है जीडी में, ग्रुप डिस्कशन अलग है। जीडी में कैन यू गिव मी फीडबैक ऑफ? हाँ मैंने दे दिया, आई हैव ऑलरेडी गिवन यू। It was my first series. See, I have already given you. You have to participate more. आपको ज्यादा बोलना है और सीधे बैठना है ढंग से, एक्टिव होकर। ये 2 चीज इंप्लीमेंट करो नेक्स्ट टाइम, Okay, sir. राइट? चलो, आई एंडेड ऑफ द सेशन नाउ, और इस पे वर्कआउट करो
और जितने भी 200 प्लस ग्रुप टास्क पड़े हुए हैं आपके पैनल पे, सुनो उनको। सुनोगे आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी जो मेरे से पूछ रहे हो ना आप, सब क्लैरिटी हो जाएगा। सुनना स्टार्ट करो और पार्टिसिपेट करना स्टार्ट करो, राइट? चलो, हैव अ नाइस डे एंड आई कैच यू लेटर। थैंक यू Yes, सर। thank you, sir.